हेलो एवरीवन, आई एम ब्रश प्रजापति। वेलकम टू माय चैनल Statistics.Education। आज के वीडियो में हम लोग कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के शॉर्ट सम सॉल्व करने वाले हैं। इफ यू आर न्यू हियर, कोरिलेशन सीरीज के 5 वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं। दिस इज द 6th वीडियो, सो इफ यू हैवंट चेक्ड दोस वीडियोस आउट, द लिंक ऑफ दोस वीडियोस विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहला सम है स्टैंडर्ड डेविएशन x इज 459,459, standard deviation y is 144, n is 1000, r is 0.11 and COV is we have to find. Okay, अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता है ना तो वो ट्रिक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वो n देखेगा और n को फॉर्मूला में वो फिट करना ट्राई करेगा, बट फॉर्मूला में n है ही नहीं, वो हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सो फॉर्मूला है r is equals to covariance of xy divided by standard deviation of x multiply by standard deviation of y. ओके, अभी वैल्यूज फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। सो r की वैल्यू है 0.11, कोवेरिएंस हमें फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन x की वैल्यू है 459,459 और स्टैंडर्ड डेविएशन y की वैल्यू है 144। ओके, सो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो द आंसर इज 6,61,62,096। ओके, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो राइट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर होता है वो राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आएगा 0.11 मल्टीप्लाई बाय 6,61,62,096 is equals to covariance of xy. So the covariance of xy is 72,77,830.56. This is the answer. Okay, so if you have any doubts regarding this, feel free to enter them in the comment section down below. Okay, let's move on to the next question. So here covariance is given, that is 41.2142. Standard deviation of x is given, that is 10.67. n is given 18, r is given 0.414 and sy is not given. So instead of covariance of xy, we need to find standard deviation of y. Okay, so here again n is not part of the formula, so r is equals to COVXY divided by sx upon sy. तो चलिए फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। r is equals to 0.414, कोवेरिएंस ऑफ xy दिया हुआ है 41.2142 एंड sx की वैल्यू है 10.67, sy की वैल्यू हमें नहीं दी है। So 41.2142 divided by 10.67, so the answer will be 3.8626 upon sy. Okay, now sy will move on to the numerator part of left hand side and 0.414 will be the denominator portion of right hand side. So it will look like this. Now we need to divide both the terms, so the answer will be 9.33. So if you have any questions, throw them in the comment section down below. Okay, now let's move on to the next question. Variance of x is given 4356, variance of y is given 15,876 and n is given 250, r is given 0.85 and sigma x minus x bar into y minus y bar is not given. Okay, so यहाँ पर variance of x दिया हुआ है और variance of y दिया हुआ है instead of standard deviation of xy. ठीक है, और कोवेरिएंस नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार। तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज हो सकती है यहाँ पर। तो पहली फॉर्मूला है सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई बाय sx मल्टीप्लाई बाय sy। तो वेरिएंस इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, यहाँ पे आपके पास 3 अलग अलग फॉर्मूला है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। या तो आप पहले स्क्वायर रूट निकाल लो, वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट कर दो, या फिर नीचे की 2 फॉर्मूला है जिसमें आप अंडर रूट के अंदर वेरिएंस ऑफ x लिख सकते हो या फिर sx स्क्वायर लिख सकते हो। दोनों ऑप्शन है, दोनों सही है। ठीक है, तो r is equals to sigma x minus x bar into y minus y bar upon n into under root variance of x multiply by under root variance of y. ठीक है, तो यहाँ पर r की वैल्यू है 0.85, sigma x minus x bar into y minus y bar हमें फाइंड करना है। उसके बाद n की वैल्यू है 250, variance of x is 4356 and variance of y is 15876। अभी यहाँ पर एक कैलकुलेटर ट्रिक मैं दिखा रहा हूँ, अगर आप वो फॉलो करोगे तो आपका आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा। नाउ ऑन योर कैलकुलेटर 250 मल्टीप्लाई बाय 4356, प्रेस अंडर रूट साइन
press multiply sign, 15,876, press under root sign, and then press M plus button. Okay. So now answer will be 20 lakh 79,000. By pressing the M plus button, we are saving that answer to our memory. Okay. अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है. सो सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू 0.85 मल्टीप्लाई बाय 20,79,000. ओके. अभी अपने कैलकुलेटर पे 0.85 multiply by, press MRC and then press equals to button. You will get the answer, that is 17,67,150. ओके. अब तक के क्वेश्चंस के अंदर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है. हम लोग आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे. अभी हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर पूरा पूरा फुल फ्लेज सम है, ठीक है. जस्ट आपको टेबल नहीं बनाना है. सिंपल. n is given, sigma x is given, sigma y is given, sigma x square is given, sigma y square is given, sigma xy is given. सारे कॉलम्स के टोटल दिए हैं, n की वैल्यू दे दी है और पता करना है r की वैल्यू, ठीक है. सो फॉर्मूला विल बी r is equals to n sigma xy minus sigma x into sigma y upon under root n sigma x square minus sigma x the whole square multiply by under root n sigma y square माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर. सो अगर आपने कैलकुलेटर ट्रिक वाले वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज गो चेक देम आउट, बिकॉज इसकी कैलकुलेटर ट्रिक मैंने दिखाई हुई है. टेबल कैसे बनाना है कैलकुलेटर ट्रिक से और सम कैसे सॉल्व करना है कैलकुलेटर ट्रिक से, ठीक है. सो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं और फिर कैलकुलेटर ट्रिक से ही आंसर दिखेंगे. तो अगर आपने वो मिस भी कर दिया है तो इसमें कवर हो जाएगा, बट टेबल बनाने का जो प्रोसेस है वो तो वहीं से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है. तो सबसे पहले n की वैल्यू 100, सिग्मा xy की वैल्यू 1331, सिग्मा x की वैल्यू 121, सिग्मा y की वैल्यू है 144, सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू है 10,230 और सिग्मा y स्क्वायर की वैल्यू है 10,460. सो ऑन योर कैलकुलेटर 100 मल्टीप्लाई बाय 1,331 m प्लस 121 multiply by 144 m minus. Okay, don't press anything else. Press check button 3 times. You will get the first value, that is 1,33,100, and again press check button 3 times. You will get the next value, that is 17,424. Okay. Now here press MRC button. You will get the deduction, that is 11,5676. Okay. Now we have to do the same process for the denominator portion for x and for y. So that is 100 multiplied by 10,230 m plus 121 multiplied by m minus, and for y 100 multiplied by 10,460 is equals to, and 144 multiplied by 144, press minus sign and then press equals to button. Now press check button 3 times. You will get the first value for x, that is 10,23,000, and again press check button 3 times. You will get 14,641. Again press check button 3 times. You will get the next value, that is 10,46,000, and again press check button 3 times. You will get the last value for y, that is 20,736. Okay. Now press MRC button. You will get the deduction for x, that is 10,08,359. Now press GT button. You will get the deduction for y, that is 10,25,264. Now don't press anything else yet. Press MRC button 2 times. Press under root sign. Okay. Press multiplication sign. Press GT button. Press under root sign, and then press M plus button. Okay, you will get the denominator, that is 10,16,776.36. Okay, now on your calculator 115676 divided by MRC, you will get the answer, that is 0.1138, and we will move on to the next sum. Similar to previous sum, यहाँ पर सिर्फ चेंज ये है कि यहाँ पर xy के बदले u भी दिया हुआ है, ठीक है. r ही फाइंड करना है. n सिग्मा u सिग्मा v सिग्मा u स्क्वायर सिग्मा v स्क्वायर सिग्मा u v सबकी वैल्यू दे दी है. तो पूरी प्रोसेस पहले जो संख्या सेम टू सेम रहेगी, ठीक है. r is equals to n sigma uv minus sigma u into sigma v upon under root n sigma u square minus sigma u the whole square multiply by under root n sigma v square minus sigma v the whole square.
So let's put the values. N is 20, sigma uv is 90, sigma u 1.8, sigma v 16.2, sigma u square 32.4, sigma v square 291.6. Okay. Now on your calculator, 20 multiplied by 90 m plus 1.8 multiplied by 16.2 m minus. Press check button 3 times, you will get the first value, that is 1800. Again press check button 3 times, you will get the next value, that is 29.16. Press MRC button, you will get the deduction. Okay, 1770.84. Okay, for the denominator portion, we will do the same process we did for previous sum for x and y. Okay, so on your calculator, 20 multiplied by 32.4 m plus 1.8 into m minus 20 multiplied by 291.6 is equals to, and 16.2 multiplied by minus 16.2 is equals to. Okay. Now press check button 3 times, you will get the first value, that is 648. Again press check button 3 times, you will get the next value, that is 3.24. Again press check button 3 times, you will get the next value, that is 5832. Again press check button 3 times, you will get the next value, that is 262.44. अभी एमआरसी प्रेस करेंगे तो यू का डिडक्शन मिलेगा, एंड जीटी प्रेस करेंगे तो वी का डिडक्शन मिलेगा. ठीक है, डोंट प्रेस एनीथिंग येट. प्रेस एमआरसी बटन 2 times, press under root sign, press multiply sign, press GT button, press under root sign, press M plus button. 1895, which will be in our memory. Okay. Now 1770.84 divided by MRC. So the answer will be 0.9345. सम के रिगार्डिंग या फिर कैलकुलेटर ट्रिक्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको डाल सकते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के लिए. यहाँ पर n की वैल्यू दी हुई है, x बार दिया हुआ है, y बार दिया हुआ है, सिग्मा x स्क्वायर दिया हुआ है, सिग्मा y स्क्वायर दिया हुआ है, सिग्मा x वाई दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके से आप सम सॉल्व कर सकते हो. पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y फाइंड कर लो. उसकी फॉर्मूला है r इज इक्वल्स टू सिग्मा xy माइनस n इंटू x बार इंटू y बार डिवाइडेड बाय n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. अगर आपको फॉलो नहीं करनी है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है सिग्मा x इज इक्वल्स टू x बार अपॉन n, तो आपको सिग्मा x मिल जाएगा. सिमिलरली सिग्मा y इज इक्वल्स टू y बार अपॉन n, सिग्मा y मिल गया आपको. r इज इक्वल्स टू n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y वाली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बट हमने वो फॉर्मूला यूज कर लिया पहले ही, तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं. ठीक है, सो sx की वैल्यू फाइंड करने के लिए अंडर रूट सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार द होल स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y फाइंड करने के लिए अंडर रूट सिग्मा y स्क्वायर अपॉन n माइनस y बार द होल स्क्वायर. ओके, तो फाइंड करते हैं sx. So on your calculator, 51,000 divided by 150 m plus 18 multiplied by m minus. Now press check button 3 times, you will get the first value, that is 340. Again press check button 3 times, you will get the next value, that is 324. Now press MRC button, you will get the deduction, that is 16, and press square root button, you will get the answer, that is 4. Okay, now we have to find SY value. So on your calculator, 9,999 divided by 150 m plus 7.3333 multiplied by m minus. Press check button 3 times, you will get the value, that is 66.66. Again press check button 3 times, you will get the next value, that is 53.7773. Okay, now press MRC button, you will get the deduction, that is 12.8827. Okay, now press under root sign, you will get the answer, that is 3.59. So we got the sx value and we got the sy value. Okay, this formula, that is sigma xy minus n into x bar into y bar upon n into sx into sy. So let's add the values. Sigma xy is 18,000, n is 150, x bar is 18, y bar is 7.3333, n is 150, sx we already obtained 4, and sy is 3.59. Okay, now on your calculator, do this. 18,000
m plus 150 multiplied by 18 multiplied by 7.3333 m minus. Okay, for denominator portion 150 multiplied by 4 multiplied by 3.59, press equals to button, you will get the value that is 2154. Okay, now press MRC button to get the deduction, that is minus 1799.91. Press divided by button, then press GT button, and then press equals to button. You will get answer that is minus 0.8356. ओके, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर दिया हुआ है, सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर दिया हुआ है, और एन की वैल्यू दी हुई है, और हमें आर फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ पर COV XY अपॉन SX into SY फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग. तो SX is equals to अंडर रूट सिग्मा x minus x bar square upon n. ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर y it is under root sigma y minus y bar square upon n. Okay, so now let's obtain both of them. Let's put the values in the formula. So on your calculator, 2736 divided by 48, press equals to button. Okay, you will get the answer that is 432. Now press under root sign, you will get the answer that is 20.7846. Okay, चलिए हम SY फाइंड करते हैं. SY is equals to sigma y minus y bar square upon n. वैल्यूज पुट करते हैं. 1,04,976 divided by 48, so that is 2187. Press under root sign, you will get 46.77. Okay, now we got both the values. Let's obtain R. So here covariance is given 900, SX is 20.786 and SY is 46.77. Okay, so on your calculator 20.7846 multiplied by 46.77 m plus. So you will get the value that is 972.096. Okay, now type 900 divided by MRC and then press equals to button. You will get the value that is 0.9258. सो दिस इज योर असाइनमेंट सम. इसके अंदर आपको सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है एंड द फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ. अगर आपको विदाउट फॉर्मूला ट्राई करना है तो अभी वीडियो को पॉज कर ले. और फॉर्मूला इज आर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाय एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई. ठीक है, आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस वेरी इजीली. नाउ आई हैव वन मोर सम फॉर यू. I think you can solve it very easily. So R is equal to COV XY divided by SX into SY. Okay, आशा करता हूँ आज आपने कुछ नया सीखा होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.